नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आम आउ गोटे सेशन जो स्टार्ट करूचे लैब वैल्यूज ऊपर रहइबो नॉर्मल लैब वैल्यूज केते रहउची आ से लैब वैल्यू जदी हमर ऊपर नीचे किछि भी होउची ताले हमर कोन कोन डिसऑर्डर बा कोन कोन डिजीज कंसर्न रहउची से सब ऊपर डिस्कशन करबा एंड नॉट ओनली हमर लैब कंसर्न्स माने लैब वैल्यूज देखिबा ता संगे तार क्वेश्चंस तो सॉल्व करबा ही करबा ता संगे किछटा एमसीक्यूज मध्ये तार एसोसिएटेड देखिदबा so that जो MCQs गुडा हमें सॉल्व करबा अपकमिंग सेशंस रे ए सेशन पर जते सॉल्व करबा सेते बेले हमको से थ्योरी पोर्शन रो ठीक है हेल्प हे जबो। ठीक अछि। गुड आफ्टरनून समस्त को जय जगन्नाथ। ज्योतिर्मयी चंदन ममता यस क्लोथ क्रिएशन अनीता शुभु गुड आफ्टरनून। तो देखो स्टार्ट कर दबा। यस ठीक अछि। गुड आफ्टरनून तो देखि दबा फटाफट सब लैब वैल्यूज रेडी देख दबा। देखो हीमोग्लोबिन जोटा कि हमर गोटे रेस्पिरेटरी पिगमेंट ता जे कि हम ऑक्सीजन कैरी करूची से पिगमेंट ता तारो मेल रे लैब वैल्यू मेल रे नॉर्मल वैल्यू होची 13 टू 17 ग्राम पर डीएल और फीमेल रे होची 12 टू 15 ग्राम पर डीएल। जते बेले लो हीमोग्लोबिन रहउची सेते बेले हम एनीमिया को जाउची जते बेले हाई हीमोग्लोबिन रहउची सेते बेले हमर पॉलिसीथेमिया कंडीशन ता को जाउची। हाई हीमोग्लोबिन हेले पॉलिसीथेमिया कंडीशन। अच्छा टोटल WBC रो काउंट हमरो 4000 टू 11000 म्यूएल रहउची जते बेले इंक्रीज कंडीशन ता को ल्यूकोसाइटोसिस को जाउची और कमी कमी गले से कंडीशन ता को ल्यूकोपेनिया बा ल्यूकोसाइटोपेनिया बोली को जाउची। ठीक अछि। यस राधे राधे रश्मिता। नेक्स्ट प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख रु 4,50,000 पाखा पाखी रहउची जते बेले अधिका देखा जाउची सेते बेले से कंडीशन ता को हमरो कम हुआ जाउची थ्रोम्बोसाइटोसिस बोली को जाउची और जते बेले कम देखा जाउची सेते बेले कंडीशन ता को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोली को जाउची। न्यूट्रोफिल जोड़ा कि हमर 40 टू 70% रे कंस्टिट्यूट करची हमर सबुड अबंडेंट WBC बोली को जाउची हाईली फैगोसाइटिक इन नेचर। एटा पुनी जते बेले हमर अधिका देखा जिवो ताहाले सीवियर न्यूट्रोपेनिया जते बेले बहुत कम देखा जिवो वेरी लेस से हेडा हला सीवियर न्यूट्रोपेनिया आउट इ कम देखाले माने 1.5 लाख माने 1500 रो कम जदी देखा जाउची सेरा हमर हला न्यूट्रोपेनिया हला न्यूट्रोपेनिया। नेक्स्ट सीरम सोडियम लेवल टा हमर 135 रो 145 रहबा दरकार जदी हमर कमुची हला लेस देन 135 इट इज हाइपोनाट्रेमिया 145 रोची ताले हाइपरनाट्रेमिया 145 रो अधिक हला हाइपरनाट्रेमिया। पोटेशियम लेवल टा 3.5 रो 5 रहबा दरकार जते बेले हाइपरकैलेमिया कंडीशन ना देखा जाउची कमिला बोली कहले हाइपोकैलेमिया बढ़िला ताले हाइपरकैलेमिया कंडीशन देखा जाउची व्हिच कैन लीड टू कार्डियक अरिथमियास कार्डियक डिसऑर्डर्स सब हमरा देखा जाउची। नेक्स्ट क्लोराइड कंसंट्रेशन बस सीरम क्लोराइड जोड़े कि हमरो 98 टू 106 कंडीशन रे देखा जाउची ए जगह हमरो क्लोराइड इंटरप्शन देखा जिवो जदी आरो हमरो स्टेटस ना मेंटेन हेकी न रहला। टोटल सीरम कैल्शियम लेवल ला हमरो 8.5 टू 10.5 mq पर मिलीग्राम पर डीएल रहउची हला। सीवियर एब्नॉर्मलिटीज देखा जिवो जदी हमरो कैल्शियम लेवल रे कोनोसी भी प्रॉब्लम होउची को प्रॉब्लम देखा जाई पारे न्यूरोमस्कुलर कार्डियक ए सब जिंस देखा जाउची। एल्बुमिन हमर जनरली हमर कैल्शियम लेवल टा अफेक्ट करूची तो सते बोली एल्बुमिन रो लेवल मध्ये बॉडी रे कोडी ना कोडी हमर टोटल सीरम कैल्शियम लेवल को इंपैक्ट पकोची। सीरम मैग्नीशियम लेवल ला जोड़े कि हमर 1.7 टू 2.5 मिलीग्राम पर डीएल है ना। जदी मैग्नीशियम लेवल लो रहउची ताले इरिटेबिलिटी मस्कुलर इरिटेबिलिटी आ एरिथमियास बा कार्डियक एरिथमियास देखा जाउची है ना। सीरम फॉस्फेट लेवल 2.5 रो 4.5 देखा जिवो हैला आउ तार जदी डिसरेगुलेशन होची ताले रीनल फेलियर होची हमर मोस्ट एप्रोप्रिएट माने देखा जाय बिकॉज़ फॉस्फेट रिटेंशन ता हमर किडनी रे देखा जाउची जहा द्वारा कि किडनी फेलियर हमर एसोसिएट होगी रही पर। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज फास्टिंग केस रे जते बेले हम जो डायबिटीज चेक करछे सेते बेले हमर 70 टू 99 रहबा दरकार हैला। अच्छा 100 टू 125 जदी रहउची ताले इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और 126 टू अधिक रहउची बोली कहले रिपीटेड टेस्टिंग मीट अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन फॉर द डायबिटीज। HbA1c जोटा कि हमरो ग्रेटर देन 5.7% हैला नॉर्मल रेंज 5.7 टू 6.4% हैला हमरो प्री डायबिटिक रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5 हैला डायबिटिक रेंज जोटा कि हमरो कंफर्म डायबिटीज बा डायग्नोसिस हमरो देखा जाउची। सीरम क्रिएटिनाइन कंसंट्रेशन जोटा कि 0.6 टू 1.3 मिलीग्राम पर डीएल adult case रे it varies with sex age and muscle mass। इंक्रीज क्रिएटिनाइन जदी देखा जाउची क्रिएटिनाइन लेवल जदी अधिका देखा जाउची ताले किडनी फिल्ट्रेशन रे प्रॉब्लम होबो आउ सी हमर
किडनी प्रॉब्लम को लीड कर परिबो हैला BUN अप्रोक्सीमेटली हमर 7 to 20 मिलीग्राम पर DL देखा जाउची आ एटा हमर रिनल डिसफंक्शन डिहाइड्रेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हाई प्रोटीन इनटेक सो एटा हमर किडनी फेलियर सहित मध्य एसोसिएट हेगिरी रोची जदि आर किछि डिसफंक्शन देखा जाय आर्टेरियल ब्लड गैस ABG नॉर्मल वैल्यू हला pH हला 7.35 to 7.45 PaCO2 हला 35 to 45 आ बाइकार्बोनेट हला 22 to 26 आउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमर 80 to 100 mmHg एट रूम हेल्दी टेम्परेचर गोटे यंग हेल्दी इंडिविजुअल नेक्स्ट नॉर्मल आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन ता जदि देखिबा ताहाले एडा हमर 95 to 100 रहबा दरकार गोटे हेल्दी अडल्ट रे हला प्रोथ्रोम्बिन टाइम दा अराउंड जोटा कि हमर क्लॉटिंग टाइम ता पीटी लेवल ला 11 to 13.5 सेकंड्स रहबा दरकार डिपेंडिंग ऑन कि हमर को प्रकार बॉडी स्ट्रक्चर रोज नेक्स्ट INR in a person not receiving anticoagulation approximately 0.8 to 1.2 तो सब पेशेंट्स मानक पई बोली थेराप्यूटिक थेरेपी जो पेशेंट माने हमर वारफरिन नो चंदी से थेराप्यूटिक INR is commonly 2.2 to 3 हैला बाकी को प्रकार पेशेंट अछि को प्रकार इंडिकेशन दिया छै से अनुसार में टारगेट करबा PTT लेवल हमर 25 to 35 सेकंड्स पई बोली रहउची ऑल्दो हमर लैबोरेटरी रो रेंज लैब टू लैब हमर वेरी करि पाइबो normal urine output is 1 to 2 liter per day in a normal average individual oliguria jete bele amara less than 0.5 ml per kg per hour anuria mane less than 100 ml per day polyuria mane more than 33 liters per day hela normal range hela amara 1 to 2 ताटू कम हला anuria माने less than 100 ml लो मते कम होछ बोली कहले anuria oliguria माने irregular urination बोली कोजे polyuria माने excessive urination greater than 3 liters per day तबे जदि देखिबा सोडियम होची 135 to 145 पोटेशियम हला 3.5 to 5 कैल्शियम हला 8.5 to 10.5 मैग्नीशियम हला 1.7 to 2.2 और PO4 हला 2.5 to 4.5 ग्लूकोज हला 70 to 99 फास्टिंग दा pH हला 7.35 to 7.45 PaCO2 हला 35 to 45 बाइकार्बोनेट हला 22 to 26 INR हला 0.8 to 1.2 हला ए वैल्यू गुडा कॉमन रेफरेंस पई बोली बाकी हमर लैब टू लैब वैल्यू मते वेरी करबो आ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मते हमर वेरी करबो ठीक अछि तो सेही जिंसटा को देखि गेरी हमें असेसमेंट करबा दरकार हैला तो ए सब हे गला हमर कोन ना क्विक मेमोरी फैक्ट्स गुडा का ए फैक्ट्स को नै गिरी ए सब कंटेंट को नै गिरी चलो एबे समस्ते एमसीक्यूज सॉल्व करबा रेडी समस्ते हैला रेडी थैंक यू सो मच राजेश गुड आफ्टरनून सुचिस्मिता सरस्वती गुड आफ्टरनून चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो सब फैक्ट्स पूरा देख देले एबे आंसर करबा an arterial blood gas reports ABG report shows pH हला 7.36 PaCO2 हला 52 mmHg HCO3 हला 29 which interpretation is the most appropriate fully compensated respiratory acidosis uncompensated respiratory acidosis partially compensated metabolic acidosis or metabolic alkalosis fully compensated metabolic acidosis चलो क्वेश्चन नंबर 1 D Anira A Suchitra Mamta Amali ए हबो हैला देखो हमर नॉर्मल pH होची 7.35 to 7.45 जहा कि टिके स्लाइड अछि अधिका 7.36 माने नॉर्मल रेंज रे ही अछि लोअर साइड रे ही अछि ठीक अछि तो एटा फुल्ली कंपेंसेटेड हे गला अच्छा PaCO2 लेवल हमर 35 to 45 रहबा कथा किंतु अछि 52 ठीक अब HCO3 टा हमर से 22 to 26 रहया कथा किंतु अछि हमर 29 ता माने एटा हमर एक्सेसिव अछि तो एडी एसिडोसिस देखा जिवो एसिडोसिस कंडीशन देखा जिवो नियाती हैला तो एसिडोसिस कंडीशन देखायला फुल्ली कंपेंसेटेड एथि बैंक कहले काहे ना हमर नॉर्मल रेंज भितर ही पड़छ आ लोअर साइड रे ही अछि pH टा A a serum potassium level of 6.2 mEq per liter should be interpreted as severe hypokalemia hyperkalemia normal variation hypomagnesemia normal potassium level ता हमर केते थिला normal potassium level थिला 3.5 to 5 mEq per liter ठीक अछि तो सिवियर ए कंडीशन रे हमर हाइपर देखा जाउची हाइपर कंडीशन देखा जाउची अधिका देखा जाउची लेवल ला हैला तो ए कंडीशन रे हमर हाइपरकालेमिया बोली कहै छै
हाइपरकालेमिया बोली कहजिवो हैला नेक्स्ट which total serum calcium value is generally considered to be the within the normal range माने calcium रो serum calcium level ना हमरो normal range टा केते it is 8.5 to 10.5 हैला 8.5 to 10.5 mg per dl जोटा कि हमारा normal range but बाकी the lab values can vary from laboratory to laboratory हैला question number 3 हैला option number C next a patient has a serum sodium concentration of 118 mq per liter which neurological complication is of the greatest concern cerebral edema with neurological deterioration hyperactive deep tendon reflexes due to hypernatremia severe intracellular dehydration increased serum osmolality due to the sodium excess question number 4 question number 4 सोडियम कॉम्प्लिकेशन देखा जाउची ए जगह रे हैला हमर नॉर्मल सोडियम लेवल 135 टू 145 रहबे दरकार जोटा कि एबे हमर रिड्यूस हे ग्रेड देखा जाई 118 बोली तो ए जगह रे एडिमा फ्लूइड एक्युमुलेशन हैला एक्युमुलेशन देखा जिवो एठी ए हमरे कोन कहजो हां कोन हबो कहलो ए हबो करेक्ट आंसर सेरेब्रल एडिमा विथ न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन ए हे जिवो करेक्ट आंसर अरे इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन काहे की होबो अरे एठी देखो सोडियम लेवल हमरो 135 रो 145 रहबा दरकार जते बेले हमरो एटा कमुची बोली कहले कोन हबो ए जो इंट्रासेलुलर शिफ्ट रहइबो ना सेरा हमरो सेरेब्रल एडिमा कॉज करबो जहा द्वारा कि न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स देखा जिवो सीजर हला कोमा हला कंफ्यूजन हला आउ माने अन्य सब जो फिट्स हला ए सब जिंस देखा जाउची ठीक अछि ए हेबो करेक्ट आंसर एठी यस सेरेब्रल एडिमा विथ न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन डिहाइड्रेशन हबनी एठी तो एक्युमुलेशन हे जाउचंदी ना नेक्स्ट व्हिच लैबोरेटरी वैल्यू इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ ल्यूकोपेनिया जेतेबे कंडीशन दा होची कोन decreased WBC count तो एडा कोन होबो बाहर को चली जिवो वाटर सोडियम दिने बाहर को चली जिवो यस इंटरसेल्युलरली आ रहइबनी से एक्सेस हे जिवो सेरेब्रल एडिमा यस मैम इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आनंदु वंस हमर भक्तिमय हमर ए वीक रे आ बाकी सब जेतिकी भी सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस उडा थिला सेटा सब कवर हे गला पारे नेक्स्ट सेशंस रो हमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस विथ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मध्ये करबा हला आज आ काली भीतर सरी जिवो सब गुटा को देन वी विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन आसा देखो कोन हबो तो एडा हमर ल्यूकेमिया को कंडीशन दर देखा जाउची ल्यूकोपेनिया यस जेतो हमर 45,500 रो 11,000 पर mm क्यूब एडा होची हमर नॉर्मल रेंज ऑफ द WBC तो ताठू कमिला बोली कहले सेडा हमर ल्यूकोपेनिया कंडीशन देखा जाउची एडा तो नॉर्मल हैला एडा भी नॉर्मल हैला एडा एक्सेस हैला अधिक हैला एडा ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन को देखलेबा नेक्स्ट a patient has a platelet count of 48,000 per mm cube then nurse should recognize an increased risk primarily for thrombotic stroke due to excessive clot formation bleeding and hemorrhagic complications polycythemia increased oxygen carrying capacity 48,000 अछि 48,000 अछि माने कोन हमर नॉर्मल रेंज रा केते रहया दरकार कार प्लेटलेट रो नॉर्मल रेंज हमर रहया दरकार 1,50,000 रो 4,50,000 पर mm क्यूब से अच्छी केते हमर 48,000 अछि ता माने एडा को कंडीशन ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कंडीशन ना आउ प्लेटलेट काउंट कमिला बोली कहले जे तो प्लेटलेट हमर क्लॉटिंग टाइम बोली रिस्पांसिबल प्लेटलेट कमिला बोली कहले एरी हमर कोन ब्लीडिंग देखा जिवो तो ब्लीडिंग एंड हेमोरेजिक कॉम्प्लिकेशंस हमर एरी एसोसिएटेड रहिबो यस नेक्स्ट which value is generally considered within the normal range for serum creatinine in an average adult although interpretation varies with muscle mass and laboratory standards 0.6 to 1.3 2.5 to 3.5 4 to 5 6 to 7 serum creatinine ro pachala serum creatinine
सीरम क्रिएटिनाइन रहउची 0.6 to 1.3 सिंपल हैला नॉर्मल लेवल ला पचारची जस्ट नॉर्मल लैब वैल्यू ला पचारची नेक्स्ट A patient has a fasting plasma glucose of 132 mg per dl on two separate properly performed tests. This result is most consistent with normal fasting glucose, impaired fasting glucose only, severe hypoglycemia, diabetes mellitus. 132 होइछ हैला 132 होउची तारो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल ना ता माने नॉर्मल होउची हमर कोन जे 100 to 105 125 100 and 100 रू 125 होउची हमर प्री डायबिटिक कंडीशन कंडीशन 70 to 99 हला हमर नॉर्मल तो जदी ए जगह रे हमर 132 देखा जाउची 132 देखा जाउची ता माने डायबिटीज मेलिटस कंडीशन ना higher blood glucose level fast only खाली नुहे only लगी जाइछि impaired fasting glucose only अन्य सब कंपोनेंट गुडा को मते तो अफेक्टेड होचनी ना अन्य सब कंपोनेंट मते तो अफेक्टेड होचनी ना तो खाली ग्लूकोज ता जे हमर फास्टिंग ग्लूकोज ता इंपेयर्ड होबो सेमिति किछ कर परिबानी हमर डायबिटीज मेलिटस ता बेटर ऑप्शन अछि जो बेटर ऑप्शन भी कि हमें सब जिन सब इंक्लूड करि परिबा ए जगह रे बुझि पारलो डी होबो यस नेक्स्ट which arterial blood pressure which arterial blood pH represent the greatest degree of acidemia acidic condition ता कोडा को बुझोची ए ऑप्शन गुडा को भितर जेतु 7.35 रू 7.45 हैला नॉर्मल ताठू कमिला बोली कहले एसिड ताठू बढ़िला बोली कहले अल्कालोसिस तो एडा हैला हम सबुट कम वालाडा आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन तो एडा हैला 7.2 yes more than 126 माने diabetes mellitus severe diabetes 7.20 next question number 10 a patient has PaO2 of 58 mmHg while breathing room air this finding indicates hypoxemia normal arterial oxygenation hypercapnia metabolic acidosis question number 10 it is हाँ hypoxemia condition yes hypoxemia condition very good हाँ एक next 80 to 100 हो जाएगा तो ना normal 58 हो चुका है hypoxemia which HbA1c value is generally considered to be within the normal range in an individual without diabetes 3 to 3.5% less than approximately 5.7% 6.5 to 7.5% greater than 8% कौन होगा question number 11 question number 11 yes less than 5.7% B yes संगमित्रा भावना सुजिस्मिता ममता सरस्वती अनिता जसकेतन next a serum magnesium level of 1 mg per dl is most consistent with hypermagnesemia normal magnesium level hypomagnesemia hypercalcemia question number 12 ଆମର नॉर्मल कैल्शियम मैग्नीशियम लेवल केते 1.7 रो 2.2 mg per dl तो ए जगह रे जदी हमर 1 अछि बोले कहले hypomagnesemia next which laboratory result is most suggestive of neutropenia माने जो neutrophils level बा neutrophil count कम हो जाउछि न्यूट्रोफिल काउंट केते बेले हबो जेतले एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट हमर 300 पर mm³ टेबल एतिके रहइबो ताहाले हबो एडी त हमर सोडियम प्लेटलेट हीमोग्लोबिन कथा कहिछि त ए ऑप्शन त हबो नहीं हमर एमिदी एलिमिनेट कर देले हमें न्यूट्रोपेनिया कथा पचाचे बोली करे न्यूट्रोफिल रो काउंट केते बेले कम रहउछि एडा ही जिवो हैला हाइपो हबो यस रश्मिता नेक्स्ट
The normal range of arterial PaCO2 is approximately 15 to 25 mmHg, 35 to 45 mmHg, 50 to 60 mmHg, 65 to 75 mmHg. Normal PaCO2 level ଆମର ରହୁଛି 35 to 45 mmHg. Oxygen ର ହେଲା PO2 oxygen arterial oxygen level 80 to 100 ରହୁଛି ଆଉ carbon dioxide 45 to 45. Option number B will be the correct answer. ହେଲା ठीक ଅଛି ठीक ଅଛି ठीक ଅଛି भावना. Next. A serum bicarbonate level of 14 MEq per liter is most suggestive of increased metabolic buffering capacity, normal acid base status, a metabolic acidosis component, respiratory alkalosis without the metabolic involvement. Question number 15. Normal level टा केते रहउचे हमरो? Normal होची 22 to 28 MEq per liter. ठीक अछि. तो एडी देइछि केते 14 देइछि केते 14 तो हमर एसिडोसिस कंपोनेंट देखा जाउछि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपोनेंट इज C 15 टा हबो C हबो C कमुछि ना लेवल ना it will be C. Next, which INR value is most commonly expected in a person not receiving anticoagulant therapy? Approximately 0.8 to 1.2, 2.5 to 3.5, 4.0 to 5.0, greater than 6.0. Question number 16. INR value टा कोन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो जोडा हमर ब्लड क्लॉटिंग टाइम को मेजर करछि तारो हमर टारगेटेड रेंज टा होछि केते 0.8 to 1.2 0.8 to 1.2 alkalosis acidosis हो कमुछि ना लेवल ना okay. A. Next, a patient has hemoglobin level of 7.2 gram per dl 7.2 gram per dl. This result should be interpreted as polycythemia, significant anemia, normal adult hemoglobin concentration, isolated thrombocytopenia. Isolated thrombocytopenia. Question number 17. Question number 17. Hemoglobin level ला केते रहइबा दरकार हमरो वुमेन मानक केस रे 12 to 15, मेल मानक केस रे 13 to 17. तो ए जगह से कहि छै कोन 7.2 ता माने ए जगह तो माने प्रॉपर एनीमिया आ जते बेले हमरो माने आरबीसी काउंट जते बढ़ी जाउची सेते बेले हमरो कंडीशन टा को पॉलीसिथेमिया बोली कहै जाउची हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन आस क्वेश्चन नंबर 18. Which serum chloride value is generally considered within the normal adult range? 75 to 85 MEq per liter, 88 to 94 MEq per liter, approximately 98 to 106 MEq per liter, 115 125 MEq per liter. सोडियम माने सीरम क्लोराइड रो वैल्यू टा एटा नॉर्मल रेंज टा होची हमर केते 98 to 106 yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19. A serum phosphate level of 1.8 mg per dl is most consistent with hypophosphatemia, hyperphosphatemia, normal phosphate level, hypercalcemia. Serum phosphate level. Question number 19. Normal serum phosphate level केते 2.5 रो 4.5 mg per dl. एडी केते देइची 1.8 देइची 1.8 देइची तो एडी हमरो को कंडीशन रही जिवो कमी जाइची ना हाइपोफॉस्फेटेमिया हैला ए ठीक अछि हाइपोफॉस्फेटेमिया. 20. Which activated partial thromboplastin time or APTT result in generally closest to the normal range depending on the laboratory methodology? 8 seconds, approximately 25 to 35 seconds, 60 to 80 seconds, more than 120 seconds. Question number 20. Question number 20. हमर जे activated partial thromboplastin time APTT होची activated partial thromboplastin time हमरो केते normal range रा केते 25 to 30 हैला नले अधिक हमें 30 to 40 जाय करि परिबा. नॉर्मल ला होची 25 to 35 seconds और 30 to 40 मध्ये कहि परिबा. A patient has an arterial blood gas showing pH 7.52 and PaCO2 28 mmHg. The primary acid base disturbance is most likely metabolic acidosis, respiratory alkalosis, metabolic alkalosis. pH होची 7.52 माने alkalosis. ठीक अछि
PaCO2 लेवल जोड़ा अच्छी सेरा हमरो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को इंडिकेट करछ और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हम 35 to 45 रहबा दरकार से कम अछि ठीक अछि से कम अछि ता माने एटा गोटे रेस्पिरेटरी इशूटा एटी हमर PaCO2 लेवल जो देइछि नॉर्मल लेवल हला हमर 35 to 45 mm अछि एटी हमर PaCO2 लेवल ना कम अछि जोड़ा कि गोटे हमर रेस्पिरेटरी इशू ठीक अब एटी हमर pH वैल्यूडा एडा जो रहुछि एतिकी जो रहुछि जेडा जोडा कि हमर अल्कालोसिस कंडीशन को डिनोट करछि तो एडा हमर रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हे जेबो करेक्ट आंसर रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हे जेबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट which total bilirubin value is generally considered within the normal adult range metabolic hoboni pattern respiratory see equa 22 question number 22 question number 22 0.2 to 1.2 mg per year yes मैम टी एबीजी एक्सप्लेन कर दियंतो तो ठीक अछि क्लास टा सरी जाओ तपर आउथरे एक्सप्लेन कर देबी हला एबीजी वैल्यूज नेक्स्ट a serum uric acid value of 11 mg per dl is best interpreted as hypouricemia normal physiological variation hyperuricemia severe hypokalemia क्वेश्चन थोड़ा सरी जाओ तपर कहि देबी 11 अच्छी हमर यूरिक एसिड रो वैल्यू नॉर्मल यूरिक एसिड वैल्यू हमर कहूची 6 रु कम हेले ठीक अछि फीमेल मानक पई बोली 6 रु कम रहबा दरकार आ मेल मानक पई बोली 7 रु कम रहबा दरकार तो ए जगह जेहेतु हमर 11 mg per liter per dl जोड़ा देखैछि सेरा हमर एलिवेटेड कंडीशन ला देखैछि है ना एलिवेटेड कंडीशन ला देखैछि तो एलिवेटेड कंडीशन रे हाइपर लागिबो एलिवेटेड कंडीशन रे हाइपर लागिबो हाइपर यूरिसेमिया सी हे जिवो 23 बी काई होबो रंजिता नॉर्मल हमर 6.0 होची माने 6.0 रु कम रहबा दरकार फॉर फीमेल्स आउ 7.0 रु कम रहबा दरकार फॉर मेल्स ठीक अछि तो एटा हमर 11 देछि 11 वैल्यूटा देछि जोटा कि हमर अधिका हाइपर कंडीशन को बुझोछि नेक्स्ट which serum albumin value is generally considered within the normal adult range 1.0 to 2.0 gram per dl 2.0 to 3.0 gram per dl 6.5 to 8.0 gram per dl approximately 3.5 to 5.0 gram per dl क्वेश्चन नंबर 24 नॉर्मल वैल्यूटा होची हमर कोन 3.5 रो 4 3.5 रो 5 ग्राम पर dl और 35 to 50 मिलीग्राम पर dl हला नेक्स्ट a patient has an arterial blood gas report of pH 7.28 PaCO2 हला 30 mmHg HCO3 minus हला 14 mEq per liter देखो नॉर्मल pH वैल्यू हो जे हमर केते 7.35 रो 7.45 ना 7.35 रो 7.45 जो कंडीशन डगी हमर एबे 7.3 रो कम अछि 7.3 रो कम अछि माने कहले एसिडोसिस अच्छा PaCO2 लेवल हमर 35 रो 45 रहबा दरकार 35 रो 45 रहबा दरकार किंतु एबे सीए मते कम अछि नॉर्मल रो ता माने एरा हमर गोटे एसिडोसिस कंडीशन को बुझोछ आ बाकी हमर गोटे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम HCO3 माइनस बा बाइकार्बोनेट रो लेवल डा हमर केते रहबा दरकार 22 टू 26 रहबा दरकार हैना 22 रो 26 रहबा दरकार जोटा के एबे कम अछि ता माने हमर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी देखौछि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी देखौछि हैला मेटाबॉलिक इशू तो ए कॉन्टेक्स्ट रे हमर कोन होय जेबो क्वेश्चन आंसर कोन होय जेबो आंसर ए हबो यस मेटाबॉलिक एसिडोसिस ता सहित रेस्पिरेटरी कंपनसेशन माने PaCO2 लेवल ना हमर जो 35 रो 45 रहबा दरकार 30 अछि माने गोटे मार्जिनल लेवल रे कम रहै छै तो एई जगह रे रेस्पिरेटरी कंपनसेशन ता संगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन ता देखा जाउ छै हला ए ठीक अछि ए हबो बी नै एबीजी ना एबीजी values next which arterial blood gas value represent the normal reference range for PaO2 in a healthy adult breathing room air normal level ना एटा तो normal level ना एटा तो normal level तो ए normal level रे केते रहउची पचरिया रहउची खाली जस्ट 80 to 100
80 to 100 है हमारा normal level. Next, a patient has a blood urea nitrogen level of 8 mg per dl. This value is generally interpreted as markedly elevated within the normal adult reference range, severe renal failure, diagnostic of the nephrotic syndrome. Question number 27. Question number 27. जेहेतु आमर जो नॉर्मल माने जो ब्लड यूरिया को नाइट्रोजन लेवल 7 to 8 mg per dl रहा दरकार सॉरी 7 to 20 mg per dl हला हमरो नॉर्मल वैल्यू तो जदी हमरो ये 8 अछि त माने ये हमरो नॉर्मल रेंज भीतर रहछि नॉर्मल रेफरेंस अडल्ट रेफरेंस रेंज भीतर ये रहछि हला नेक्स्ट which serum osmolality value is generally considered within the normal range osmolality value da 220 to 220 milliosmol per kg, 250 to 265 milliosmol per kg, approximately 275 to 295 milliosmol per kg, 320 to 350 milliosmol per kg. 28. 28. It is approximately 275 to 295 milliosmol per kg. Normal range. Normal range. B. C. Correct. Next. A patient has a hematocrit of 22%. Which interpretation is most appropriate? Normal adult value, polycythemia, mild hemoconcentration, significantly decreased hematocrit. Significantly decreased hematocrit. 22% अच्छे कौन? Hematocrit level. Hematocrit रे माने कौन? The number of RBC in the नहीं एमिदी तो नहीं RBC or erythrocyte in the cell volume, in the blood volume रे हमरो केते के अमाउंट रो अछि कोन आरबीसी बा एरिथ्रोसाइट सेरा डिनोट करछि हमर हेमाटोक्रिट लेवल जोटा की गोटे मेल पाई बोली नॉर्मल लेवल केते 40% रो 54% गोटे फीमेल पाई बोली नॉर्मल केते हला 37% रो 48%. ठीक अछि तो ए कंडीशन रे हमरो बहुत कम अछि इट इज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड हेमाटोक्रिट significantly decreased hematocrit. Hala? Yes. So next question jiba. Which serum potassium value is generally considered to be within the normal adult reference range? 3.5 to 5.0, 1.5 to 2.5, 5.8 to 7.0, 7.5 to 9.0. Normal range re koda serum potassium level it is 3.5 to 5.0 MEQ per liter. 3.5 to 5.0 MEQ per Correct. Next question also, question number 31. An arterial blood gas analysis shows PaCO2 of 20 mmHg. The value is best interpreted as PaCO2 level है 20 20 जोटा कि हमरा 35 रु 40 रहिया दरकार 35 रु 45 रहिया दरकार है ना किंतु एटा हमर बहुत कम अछि ठीक अछि बहुत कम अछि तो ए जगह रे को कंडीशन देखा जाउची इंक्रीज्ड आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन ए कंडीशन देखा जाय है ना एटा हमर हाइपोकैप्निया सिचुएशन next which serum total protein value is generally considered within the normal adult reference range 2 to 3 gram per dl approximately 6 to 8 gram per dl 9.5 to 12 gram per dl 14 to 16 gram per dl question number 32 albumin globulin ए सब जो माने कंटेंट ता मेंटेन करछि जो नॉर्मल हमर जो सीरम प्रोटीन वैल्यू बोली गले albumin globulin लेवल उडागा albumin globulin level उडागा सेना हमर जनरली केते रहबा दरकार 6 to 8 gram per 6 to 8 gram per dl. Next, a patient has an absolute neutrophil count or ANC of 450 per mm cube. This laboratory value indicates severe neutropenia, normal immune status, mild thrombocytopenia, polycythemia. हमर जते जो नॉर्मल काउंट जदी देखिबा हैला हमर अबव रहबा दरकार केते अबव 1 लाख सॉरी अबव 1500 1 लाख कह देली 1.5 लाख कह देली 1.5 ठीक अछि जदी 500 रु कम होची बोली कहले न्यूट्रोपेनिया कंडीशन देखा जाउची तो एडा हो हमर कोन सीवियर न्यूट्रोपेनिया कंडीशन 500 रु भी कम देखा जाउची लेस देन 500 हे गला हमें न्यूट्रोपेनिया कहूचे सीवियर न्यूट्रोपेनिया हैला नेक्स्ट ए हबो ए
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अरे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होची प्लेटलेट पई बोली 33 सी काहे होबो 33 सी काहे होबो सी रा होची बा हमर प्लेटलेट काउंट जते बेले कमिला थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एरी हमर न्यूट्रोफिल कथा पचारची न्यूट्रोपेनिया कथा होबो हैला एमितिरे मध्ये एलिमिनेट करी पळेबो गो तमे हैला पॉलिसिथेमिया हैला आरबीसी पई एटा तो हबोनी इम्यून स्टेटस हमर मेंटेन करिवार काम हैला डब्ल्यूबीसीज रो सेडा हमर नॉर्मल तो रहइबनी काहे जे तोडा कम अछि सीवियर न्यूट्रोपेनिया नेक्स्ट which value is generally considered within the normal range of serum lactate in a resting patient 4 to 6 millimole per liter 8 to 10 millimole per liter approximately 0.5 to 2 millimole per liter greater than 12 millimole per liter on about question number 34 question number 34 it is approximately 0.5 to 2 millimole per liter हैला 0.5 to 2 millimole per liter next correct ठीक अछि 35 a patient has a serum amylase level markedly above the usual laboratory reference range which organ should be primarily considered during further evaluation thyroid gland pancreas or adrenal cortex na spleen serum amylase level amara अधिका देखा जाउछि हैला serum amylase level अधिका देखा जाउछि तो को organ टा फर्दर इवैल्यूएशन बा को ऑर्गन दा टारगेट हेई पारे जते बडे हमर अमाइलेज लेवल ला अधिका होची थायराइड ग्लैंड पैनक्रियास एड्रिनल कॉर्टेक्स ना स्प्लीन जेतु अमाइलेज गोटे इमीडियर कंपोनेंट ता जोडा रे कि हमर कार्बोहाइड्रेट लेवल दा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में बोली रिस्पांसिबल कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में बोली रिस्पांसिबल जोटा कि हमर पैनक्रियास रो रिलीज होची पैनक्रियास रो रिलीज होची ठीक अछि तो ए जो पैनक्रियास रो रिलीज होची एडा हमर अफेक्टेड ही जाउची हला तो एडा हमर पैनक्रियास हबो आउ ता संगे रे एडा कोन माने लीड कोन करची एडी जो जिंस हम इवैल्यूएशन करबा कोन लीड करची हमर एक्यूट पैनक्रियाटिटाइटिस कंडीशन को हमर ये डिनोट करि पारे हला डिनोट करि पारे next question number 36 which red blood cell index represents the average volume of an individual erythrocyte mch mchc rew mcv माने कोन एडा हम आंसर हे जबा mcv mean corpuscular volume है ना next REW माने कोन जोटा कि which measures the variation in the red blood cell size रे variation है ना it measures the variation in red blood cell size next MCHC कोन एडा it measures the hemoglobin concentration relative to the cell volume measures the hemoglobin concentration relative to cell volume अब MCH level दा कोन MCH हमर hemoglobin content per cell को measure करछ measures the hemoglobin content per cell तो ए जगह रे जो आमे जतबे इंडिविजुअल एरिथ्रोसाइट वैल्यू को हम मेजर करिया जेबा ना एमसीवी वैल्यू हमें देखियो हैला मीन कैप्सूल corpuscular volume next an mcv value of 68 fl is most consistent with microcytic erythrocyte macrocytic erythrocyte normocytic erythrocyte increased platelet volume जेतु हमर नॉर्मल रेंज रा केते रहउची 80 to 100 fl 80 to 100 तो एडी जदी हमर 68 हेची एडी जदी हमर 68 हेची ता माने माइक्रोसाइटिक एरिथ्रोसाइट्स ए हबो नेक्स्ट which laboratory parameter reflects the average amount of hemoglobin present in a single red blood cell जोटा कि देखिले हम जस्ट एबे ना सिंगल आरबीसी वैल्यू हमको जतोडे सिंगल कारियार अछि एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अच्छा एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पचाछि आरबीसी नो एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पचाछि तो सेडा हे जबो कोन
MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है ना एटा होची मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन लेवल ला पचाचे तो हीमोग्लोबिन लेवल ला देखिए नेक्स्ट a serum alkaline phosphatase ALP level is particularly useful in assessing the disorders involving bone and hepatobiliary systems, pancreatic beta cells only, renal glomerular filtration exclusively, thyroid hormone synthesis only. Question number 39. ALP जोटा कि हमर alkaline phosphatase एंजाइम डारो सेडा देखु जामे एडा गोटे एंजाइम डा जोटा कि हमर लिवर रे बहुत अधिक कंसंट्रेशन रे देखा जाउछ हैला लिवर रे बहुत अधिक कंसंट्रेशन रे देखा जाउछ ता माने आर जते बेले हमर डिसऑर्डर्स किछि होउची तो हमर लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखा जिवो ना तो हेपाटो आउ तो कोडी नाही हेपाटो बोन एंड हेपाटोबिलियरी सिस्टम्स विल बी अफेक्टेड सी होबनी कांगे सी होबो रेनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कांगे होबो देखो हमर बाइल जो फॉस्फेटेज ता ठीक अछि ए जो फॉस्फेटेज ए जो लेवल अल्कालाइन फॉस्फेटेज लेवल हमर लिवर द्वारा जनरेट होछ आ जागिरे हमर बोन से स्टोर हेगिरी रहथाय तो जते बेले हमर आ सहित किछि डिसऑर्डर एसोसिएटेड हेगिरो होछि बोली कहले लिवर अफेक्ट होबो ना फिल्ट्रेशन रेट कांगे अफेक्ट होबो किडनी वाडा को कारे वाला नेक्स्ट which laboratory value is most appropriate for assessing the average blood glucose level of over approximately the previous 2-3 months random blood glucose fasting blood plasma HbA1c urine glucose question number 40 जते बेले हमें assess करते average blood glucose 2-3 मास होला माने for the past 8 to 12 week से केस रे हमें HbA1c AC ए कंडीशन HbA1ac एडा हमर जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन को देखो छे एक केस रे हैला तो तबे हमें प्रीवियस 2-3 मंथ्स रे पास्ट 2-3 मंथ्स रे एसेस कर छे हैला सी नेक्स्ट which serum ionized calcium value is generally considered to be within the normal range calcium value हैला approximately 4.5 to 5.6 mg per dl 1 to 2 mg per dl 7 to 9 mg per dl 12 to 15 mg per dl 41 it is A हैला it is A approximately 4.5 to 5.6 mg per dl जोटा कि आमी जते बेले mml रे देखिबा 1.1 रो 1.35 मिलीमोल पर लीटर ए वैल्यू रे आसे हैला नेक्स्ट A patient has a serum sodium concentration of 154 MEq per liter. This is classified as hyponatremia, hypernatremia, normal sodium concentration, pseudohypokalemia. 4.5 रो ना 154 अछि नाही 154 अछि तो 154 बोले कहले हमर नॉर्मल सोडियम लेवल होचे 135 रो 145 ए लेवल ला हला हमर नॉर्मल लेवल ला ठीक अछि 154 अछि माने अधिका माने हला हाइपर आउ नाट्रेमिया रो माने हला सोडियम लेवल को बुझौची हाइपरनाट्रेमिया बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट which laboratory test is most directly used to assess the extrinsic and common coagulation pathway bleeding time APTT PT by INR platelet count clotting time ला को हम देखिया पई बोली extrinsic common pathway जोटा हमर कह जाउची कोन देखु जे हमें से केस रे हमर PT by INR हैला PT by INR जतले इंट्रिंसिक देखिबा ताले सेटा हबो हमर APTT जोटा होची कोन हमर एडवांस्ड सॉरी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एटा होची एक्टिवेटेड partial thromboplastin time एरा हमर इंट्रिंसिक फैक्टर को बुझो इंट्रिंसिक फैक्टर y हमर जो pt माने कोन प्रोथ्रोम्बिन टाइम by the international normalized ratio ए लेवल लगो बुझो हैला नेक्स्ट एडा हमर एक्सट्रिंसिक पे
44. A patient has an elevated serum troponin concentration. This laboratory finding most strongly indicates skeletal muscle hypertrophy, myocardial injury, chronic liver disease only, increased glomerular filtration. Elevated troponin concentration बहुत अधिक अछि और troponin dita जो I out T जोड़ा कि हमर रेगुलेटरी प्रोटीन उडा को कार्डियक सेल्स रे देखा जाउची हैना तो एही जदी हमर troponin लेवल अधिक होईची त माने मायोकार्डियल हार्ट रिलेटेड इंजुरी हमर देखा जाउची मायोकार्डियल इंजुरी नेक्स्ट which serum value is generally considered normal for fasting triglycerides less than 150 mg per dl 250 to 350 mg per dl 400 to 500 mg per dl more than 600 mg per dl कौन होगा क्वेश्चन नंबर 45 it is less than 150 mg per dl हैला नॉर्मल होची हमरो 150 रु तळु को हेले नॉर्मल 150 रु 199 हैला माने बॉर्डर लाइन एरा माने हैला बॉर्डर लाइन हाई रो माने हैला कोन 199 रु 499 हैला एरा हैला हमरो हाई ठीक अछि और 500 mg per dl जते बेले हैला एरा हैला वेरी triglyceride. Next, a patient has an erythrocyte sedimentation rate or ESR that is markedly elevated. Which interpretation is most appropriate? It specifically confirms the bacterial infection. It is a non-specific indicator that may increase with inflammation. It confirms myocardial infarction. It directly measures the renal filtration rate. ESR value पचाची. ESR value एडा हमारा जो erythrocyte sedimentation rate सेरा हमारा non-specific indicator जोटा कि हमारा इन्फ्लेमेशन द्वारा अधिक जते इन्फ्लेमेशन होबा सते वैल्यू हमर बॉडी मध्ये देखा बॉडी के मध्ये देखा जाई पारे हला ठीक अछि नीतू प्रधान दिनेश मामाली सुदीप्ता नेक्स्ट बी इज करेक्ट ऑप्शन 47 which serum AST value is generally closest to the normal adult reference range recognizing that ranges may vary among the laboratories approximately 10 to 40 u per liter 80 to 120 u per liter 150 to 200 u per liter 300 to 400 u per liter normal AST value AST माने कोन aspartate aminotransferase AST रो value माने हला aspartate aminotransferase ठीक अछि तो ए वैल्यू डा हमर केते रहबा approximately 10 to 40 रहया दरकार 10 to 40 रहया दरकार ठीक नेक्स्ट a patient has a serum lipase level markedly above the normal reference range. This finding is most strongly associated with pathology involving the kidney, liver, pancreas, bone marrow. Lipase जोटा कि ओडा हमर एंजाइम सीरम lipase level ना कथा पचाची हैला जोटा कि हमर कोठु ना पैनक्रियास रो ही जनरेट होची एडा गोटे हमर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम दा जतबे आर लेवल दा बढ़ी जाउची ता माने हमर पैनक्रियास ता अफेक्टेड होची जोटा कि हमर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कंडीशन को डिनोट करची हैला पैनक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम दा हैला नेक्स्ट क्वेश्चन which urine specific gravity range is generally considered normal 1 ro 0.1.002 approximately 1.005 to 1.030 1.040 to 1.060 greater than 1.080 कौन हबो नॉर्मल लेवल टा होची कोन 1.005 रो 1.030 ठीक अछि एडा हला हमर नॉर्मल यूरिन ग्रेविटी रो रेंज a patient has a D-dimer level significantly above the laboratory reference range which interpretation is most appropriate it definitely confirms the pulmonary embolism it confirms normal coagulation it indicates increased fibrin degradation but is non specific it excludes all thrombotic disorders D-dimer जोटा कि हमर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ता क्रॉस लिंक फिब्रिन रो ता माने ब्लड क्लॉटिंग जोड़ी हबो सेडा हम सब ब्रोकन डाउन हे जिवो ता माने इट इंडिकेट इंक्रीज्ड फिब्रिन डिग्रेडेशन बट इज नॉन स्पेसिफिक फिब्रिन डिग्रेडेशन तो देखो जे किंतु हमर स्पेसिफिकली नथा ठीक अछि सो आज रो क्लास एति कि जाय थिला एवरीवन आई होप आज रो सेशन तमानक पई बोली हेल्पफुल थिबो एमिति आउरी भी सेशंस अछि आगु ठीक अछि आउरी भी सेशंस अछि तो सब सेशंस को मध्ये हमें देखिबा गोटे गोटे करके सब गुडा क्वेश्चंस हमें सिंपली सॉल्व कर पाइबा देखो एबीसी वैल्यू कथा कहउथुना देखो पुनी ऑथोरिटी के रिवाइज कर दियो पीएच वैल्यू जतबे हमर 7.35 7.45 रोज एराला नॉर्मल पीएच CO2 लेवल 35 to 45 हला नॉर्मल ताटो कमिला माने एसिडोसिस ताटो बढ़िला माने अल्कालोसिस HCO3 मध्ये सेमिति 22 to 26 हला नॉर्मल बढ़िले कमिले सेडा हमर से अनुसार मध्ये रेगुलेट होची
ऑक्सीजन टा 80 टू 100 भीतर होची हमर नॉर्मल लेवल हैला। अच्छा तापरे एक्टिव ऑक्सीजन लेवल जदि देखबा 95 रो 100% रहउची। प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ एडा सब प्रोथ्रोम्बिन टाइम कथा आसीगलानी हैला। एबीजे वैल्यू बोली कहले तमे एति की मने रखि दबो ठीक अछि। से अनुसार हमर अल्कालोसिस होची बा एसिडोसिस होची से जिंसरा हमर डिनोट हो जाउची ठीक अछि। मु ए सब पीडीएफ गुडा को तुमको शेयर कर देबी हैला। तुमको शेयर कर देबी जा द्वारा कि तुमको रिवीजन ପାଇଁ बोली हेल्पफुल हबो। और आज रो सेशन केमिति लागिला मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणाबो। एंड फर्दर सेशंस गुडा को मध्ये हमर शेड्यूल हे जाइची। ता छडा मध्ये तुमको जदि आउ किछि स्पेसिफिक सेशंस दरकार तुम रिक्वायरमेंट रहउची ताहाले मते निहाती कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणाबो। वी विल बी ट्राइंग टू add that to our schedule हैला। से कंटेंट ऊपर मध्ये हम वीडियोस आइबो को चेष्टा करबा ठीक अछि। पीडीएफ मु पठे देबी एबे संगे संगे क्लास सरू सरू मु व्हाट्सएप ग्रुप रे मु शेयर कर देबी ठीक अछि। और जो माने मते व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड हेइ नहांती माने व्हाट्सएप ग्रुप रे लिंक ता ऑलरेडी गिवन अछि तमे माने सेडा रे ऐड हेइ परिबो ठीक अछि। सब कंटेंट सब वगैरह सब जिंस हमरा एठी मिल जिवो तुमको ठीक अछि। सेते पय बोली बी प्रिपेयर्ड प्रिपरेशन चालू रखि थाओ। देखा पुनी आउडी नुवा सेशन रे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय जगन्नाथ।